Hello बच्चों and welcome again to the clinical anatomy case discussion of the lower limb. ये कौन सा केस है? नंबर 7. ये नंबर 7 केस चल रहा है. आई एम श्योर आपने सारे प्रीवियस केसेस देख लिए हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है. हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट सारा डिस्कस किया है केस डिस्कशन के सीरीज में. नाउ कमिंग डाउन टू द लेग. कम ऑन बच्चों, देख लीजिए ये एमसीक्यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. A 22 years old falls and sustains a fracture of the neck of fibula. बच्चों, fracture of the neck of fibula, fracture of the neck of fibula. जैसे ये fracture of neck of fibula आता है, something should come to your mind. अब options देखने से पहले something should come to your mind. Fracture of the neck of the fibula. There's a nerve which winds around the neck of the fibula. What is that? Common peroneal nerve. Common peroneal nerve winds around the neck of the fibula. फिर common peroneal nerve divides into a superficial and deep peroneal nerve. Deep peroneal. हाँ ठीक है, तो ये एक पहले प्रोफॉर्मा समझ लो, देन वी सी द क्वेश्चंस. बाद में क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो sciatic nerve, पहले तो sciatic nerve है. Sciatic nerve divides at the apex of the popliteal fossa or the superior angle of the popliteal fossa में sciatic nerve divides into a tibial nerve, and a common peroneal nerve. Common peroneal nerve winds around the neck of the fibula. The common peroneal nerve divides into a superficial peroneal nerve and a deep peroneal nerve. ठीक है, superficial and deep. बस ये टेबल याद रखना बच्चों. Once this table is clear, no confusion. So common peroneal nerve winds around the neck of the fibula, जहां पे वो commonly injure हो जाती है. Divides into a superficial and deep peroneal. अब बोलो superficial peroneal goes to which compartment? Lateral compartment of the leg. The deep peroneal nerve goes to the anterior compartment of the leg. Anterior compartment. What is the action of the lateral compartment? Eversion of the foot, and anterior compartment is dorsiflexion. ठीक है. Anterior compartment action is dorsiflexion, lateral compartment action is eversion of the foot. If this common peroneal nerve is injured, superficial and deep दोनों जाएंगे. I mean both the nerves are gone, right? So deep peroneal nerve anterior compartment को supply करती है. Action is dorsiflexion. Dorsiflexion is lost. क्या होगा? Foot drop होगा, right? Foot drop होगा. What is the gait? A high stepping gait. Foot drop होता है, the foot goes like this, तो high stepping gait होता है. The person has a high stepping gait or stamping gait or waddling gait. हाँ, यहाँ पे eversion of the foot is lost, तो वो inversion होता है. Tibial nerve supplies which compartment? Posterior compartment. So tibial nerve supplies the posterior compartment of the leg. ये क्या करते हैं? Plantar flexion and inversion. So बच्चों, कोई भी MCQ आता है जिसमें fracture of the neck of the fibula or injury to the neck of the fibula, something very important, common peroneal nerve is damaged, divides into a superficial, deep. Superficial goes to the lateral, deep goes to the anterior compartment, जो dorsiflexion करेगा. Lost foot drop. ये याद रखना आपको, foot drop होगा. सिंपल है ना, समझ में आ रहा है? कितना इजी किया देखो. हाँ, ऐसे इजी तरीके से समझना अपने को एनाटॉमी. Once it is very clear, you get a confidence. And अगर एनाटॉमी में कॉन्फिडेंस आता है तो फर्स्ट ईयर क्या, आगे के साल भी बहुत इजी हो जाते हैं. ठीक है, चलो have a look at this once again. So 22 years old falls and sustain a fracture of the neck of the fibula. इससे हमने कुछ diagnosis पे आ गए हम. He cannot dorsiflex the foot. ये देखो, what is that? Foot drop है ना, foot drop, and has numbness in the first web space. ये देखते हैं. First web space is supplied by deep peroneal nerve. Dorsiflexion of the foot is lost, so deep peroneal nerve is injured. Deep peroneal nerve. Ideally दोनों nerves हैं. Common peroneal nerves divides into superficial, deep. दोनों nerves involved होंगे. But this question is specifically asking us about the deep peroneal nerve. Dorsiflexion of the foot, that's deep peroneal nerve. First web space, that's deep peroneal nerve. ठीक है. So nerve injured. अब single best answer क्या होगा? और ठीक है, ये कॉमन पेरोनियल नर्व लिखते हैं, कॉमन पेरोनियल नर्व, बिकॉज सस्टेन फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिबुला है ना, नेक ऑफ द फिबुला, तो आंसर वुड बी कॉमन पेरोनियल नर्व. व्हाई इज इट वल्नरेबल हियर? बिकॉज इट इज वेरी सुपरफिशियल है. वाइंड्स अराउंड द नेक ऑफ द फिबुला, वाइंड्स अराउंड द नेक ऑफ द फिबुला. ठीक है. One expected posture of the foot at rest. What is that? Foot drop. ये क्या होगा? Foot drop.
है ना. And which specific branch explains the first web space numbness? अब specific branch कौन सी है जो first web space को supply करती है? That's a deep peroneal nerve. Deep peroneal nerve. बच्चों ये हमने last we have seen this in the last clinical case discussion also. Last clinical case discussion में भी हमने देखा है. देखो that's a foot. ये फुट है. अब ये डॉर्सम करते हैं. लास्ट क्लिनिकल केस में हमने प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ द फुट, सोल ऑफ द फुट का नर्व सप्लाई देखा था. नाउ कम टू द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट. वंस अगेन दिस डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट इज सप्लाइड बाय व्हिच नर्व? दिस इज डॉर्सल. मैं क्या लिखूं यहाँ पे? डॉर्सल एस्पेक्ट. डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट. This is what? Superficial peroneal nerve. The dorsal aspect of the foot is supplied by superficial peroneal nerve. The medial aspect of the great toe, all the web spaces, जितने भी web spaces आप देख रहे हो, this is supplied by the superficial peroneal nerve. Superficial peroneal nerve. Okay. The first web space, बच्चों, where we put our slippers, this is supplied by the deep peroneal nerve. So जहाँ पे अपन slippers पहनते हैं, the first web space that is supplied by the deep peroneal nerve. The dorsum of the foot, the medial aspect of the great toe, all the webs except the first, superficial peroneal. The lateral aspect of the foot, इसको कौन सप्लाई करता है? Sural nerve. Sural. Medial aspect of the foot up to the great toe. Up to the great toe. ये कौन है? Saphenous nerve. Up to the great toe is saphenous nerve. Perfect है? Fine. अगर ये सोल होता, सोल, सोल का हमने देखा था, याद है? सोल का nerve supply. Nerve supply of the sole of the foot. What was this? That is tibial nerve. And this 3.5 and 1.5, this is medial plantar nerve and that's lateral plantar nerve. Medial plantar and lateral plantar, ये sole है, sole. All the plantar aspect of the foot. ये plantar aspect है, ये dorsal aspect है. Dorsal aspect को कौन supply करता है? Superficial peroneal. And rest बाकी सब same है. Rest everything is the same. Only sole पे अलग है, dorsum पे अलग है. बाकी सब same है. I hope students this clinical case discussion is very clear to all of you. ठीक है, कुछ डाउट्स है? हाँ, इस पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं. फुट ड्रॉप एंड बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो ये टेबल याद रखना. इसे भी खत्म ही कर देता हूँ. हाँ चलो. टिबियल नर्व गोस बाय पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाएगा. ये क्या करेगा? प्लांटर फ्लेक्शन एंड इन्वर्शन. प्लांटर फ्लेक्शन एंड इन्वर्शन. That's fine. स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हो? हाँ अच्छा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ जरूर कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिए. आंसर दिस इन द कमेंट बॉक्स. एंड अगेन वन एमसीक्यू स्पेसिफिकली फॉर यू. सेंसरी लॉस इन द फर्स्ट डॉर्सल वेब स्पेस सजेस्ट इंजरी टू. अगर आपको ये क्लिनिकल केस डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया, सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस एमसीक्यू. Thank you once again from the entire team of Anatomy Unlimited. देखते हैं, मिलते हैं अगले क्लिनिकल केस डिस्कशन में. देखते रहिए पूरा सीरीज ऑफ लोअर लिम्ब. हैव कॉन्फिडेंस. थैंक यू.